Hello and welcome to Web3 Diaries. I'm your host Roshni Shingre. Hello, I'm your host Shikha Singh, giving you your daily dose of news snippets from the Web3 universe. Hello, I'm your host Vishaka Thakur. Let's start with the news for today. The Tornado Cash token is up 10% after a proposal submitted by a wallet address linked to a recent attack on the decentralized autonomous organization's governance state looks to reverse the malicious changes. The attacker posted a new proposal to restore the state of governance. User Tornadosaurus Hex wrote in the Tornado Cash community forum, adding that there is a good chance that the attacker would execute it. Tornadosaurus Hex said that the attacker is reverting the TORN tokens they gave themselves, which gave them a controlling share of the governance votes, back to zero. Given the attacker's holding of TORN governance tokens, the proposal looks as though it will pass when voting closes on May 26, though it's unclear when the action will be executed. When the proposal passes, the malicious code that the attacker integrated into the protocol, which allowed them to steal voting power from others, will be removed and the governance of Tornado Cash's DAO will go back to token holders. As a result, TORN was up as much as 10% according to CoinGecko data before settling back down. Oxdead4C, an active member of the TORN community, pointed out that this might be a giga troll to depress the price of the token to increase their holdings at a discount. Structural attacks on DAOs and DeFi protocols, which differ from hacks where the attacker breaks code instead of exploiting it, have resulted in charges, but the attacker behind this exploit is likely counting on the fact that Tornado Cash was recently designated as a sanctioned entity. Over to you, Roshni. In order to muster in favorable changes, several industries continues to witness an increase in spending towards federal lobbying efforts. As per recent report from Washington DC based on political watchdog OpenSecret, shows that first quarter federal lobbying has topped $1 billion for the second consecutive year. Industries such as healthcare, finance, real estate and energy lead the ranking in lobbying spend with overall spend of $4.1 billion on federal lobbying efforts. As for crypto, despite increasing regulatory hostility from DC, crypto's actual lobbying spend came in at $21.6 million for the year, according to OpenSecret's data. Though this suggests an increase from years prior, but as an industry with a market cap of just over $1 trillion, it wouldn't even crack the top 20 list for lobbying spend. In comparison, Big Pharma spent $375.2 million in 2022. The automotive industry spent $82 million and commercial banks paid $64.6 million to lobbyists that year. The industry's political contribution to election campaigns grew tenfold from 2020 to 2022, totaling $2.3 million in the latter, OpenSecret recently reported. Major contributors include Coinbase, which alone spent $3.4 million on lobbying. OpenSecret's data shows that lobbying by crypto majors is up during the first quarter of the year. Tether has spent $270,000 lobbying in the first quarter of 2023, which doesn't sound like much but is a huge jump over its first quarter 2022 spend of $1 lakh. The Blockchain Association is up as well to $490,000 spent this quarter compared to $460,000 for the same time last year. Stablecoin issuer Paxos also saw a huge jump and its lobbying spend rising from $50,000 in Q1 2022 to $80,000 in past quarter. Of course, this is all dwarfed by TradeFi lobbying spending. The American Bankers Association spent $2 million during this past quarter, while Citigroup spent $1.4 million. Sadly, successful businesses need to lobby to become more successful. That's just the nature of modern politics, and it looks like crypto must do more of it. Over to you, Shikha. Demand for tokenized versions of US Treasury bonds is soaring as rising yields in traditional financial markets attract fresh capital from crypto investors. The combined market capitalization of tokenized money market funds nearly $500 million and has quadrupled in size this year according to data compiled by CoinDesk. Money market funds are traditional investment products that hold short-term government securities and offer a relatively safe way to earn a yield. Investors have been flocking to these funds for their perceived safety after failing banks and the 5 to 4% interest rate offering compared to bank deposits. The high yields of government bonds have also captivated digital asset investors discouraged by low lending rates and last year's bankruptcies. Hence, a slew of platforms have come up with a few to offer access
to them on the blockchain in the form of a token. The first and largest offering investment giant Franklin Templeton's Franklin on-chain US government money fund, which gave a Benji token on the Stellar blockchain representing 1 share, grew to $276 million in assets as of the end of April. This is almost triple the deposits in early January represented by the Benji token supply, blockchain data shows. New challengers are quickly catching up in market share. On the finances, OUSG and Matrix Stocks SBTV tokenized products, both open for investors in January and each backed by short-term government bonds, have ranked in $132 million and $72 million of funds so far, respectively, according to Dune Analytics dashboard by Steakhouse Financial. The tokenization of real-world assets such as government bonds has emerged as one of the hottest trends in crypto this year. Banking giant JP Morgan called it the killer app for blockchain, while Bank of America said it's a key driver for digital asset adoption. Analysts say brands like Franklin Templeton and Ondo Finance are bringing more trust to an asset that would be viewed more skeptically. That's it in today's special segment. For more such updates, follow 3.0TV or log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more. नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। एक तरफ जहां नए NFT लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, कई NFT प्रोजेक्ट्स तेजी से उभर रहे हैं, साथ ही ओवरऑल NFT सेल्स में भी इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस साल की शुरुआत से अब तक 4 NFT प्लेटफॉर्म्स ने अचानक अपने ऑपरेशंस बंद कर पूरी NFT इंडस्ट्री को हैरत में डाल दिया है। WazirX NFT मार्केटप्लेस, मेटा का NFT फीचर और फॉर्म फंक्शन के बाद अब पैराडिम जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी से बैक्ड NFT प्लेटफॉर्म टेसेरा ने भी आने वाले दिनों में अपने ऑपरेशंस को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है। टेसेरा के को-फाउंडर एंडी चोलियन ने ट्वीट किया है कि बहुत सोच विचार के बाद हमने ये बेहद मुश्किल फैसला किया है कि आने वाले कुछ दिनों में टेसेरा को शट डाउन कर दिया जाएगा और ये फैसला हमने मार्केट सिनेरियो, अपने कंपनी स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सिचुएशंस को बारीकी से एनालाइज करने के बाद किया है। सिर्फ टेसेरा ही नहीं, बल्कि उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद डिजिटल फाइन आर्ट मार्केटप्लेस एस्टर भी बंद होगी। एस्टर को शट डाउन करने के पीछे भी यही वजह दी गई कि इसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कुछ डिफिकल्ट टारगेट्स अचीव करने होंगे, जिसके लिए ना तो पर्याप्त वक्त है और ना ही पैसा। हैरानी की बात तो ये है कि 1 साल भी नहीं हुआ टेसेरा अपने ओरिजिनल नाम फ्रैक्शन से रीब्रांड होकर टेसेरा के नाम से रीलॉन्च हुआ था। साथ ही इन्वेस्टमेंट जायंट पैराडिम से टेसेरा को $20 मिलियन की फंडिंग भी मिली थी। इतना ही नहीं, टेसेरा को सीरीज ए फंडिंग राउंड में फोकस लैब्स, यूनिस्वैप लैब्स वेंचर्स, ईगल कैपिटल और यूनिट कैपिटल से सपोर्ट भी मिला था। बावजूद इसके क्यों टेसेरा के सामने शटडाउन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। NFT मार्केटप्लेसेस के बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ WazirX NFT मार्केटप्लेस के साथ, जिसने अचानक रातों रात अपने प्लेटफॉर्म को बंद करके हर किसी को चौंका दिया। उम्मीद के मुकाबले मुनाफा और ट्रैक्शन भी ना मिलना ही WazirX NFT मार्केटप्लेस ने शटडाउन की वजह बताई। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी पहले तो बड़े जोर शोर से अनाउंस किया था कि वो 100 कंट्रीज में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर NFT फीचर शुरू कर रहा है, जिससे मेटा के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर NFT डिस्प्ले और मिंट की जा सकेगी। लेकिन फिर अचानक मार्च में मेटा ने घोषणा कर दी कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये NFT फीचर बंद कर रहा है और इसके पीछे वजह बताई गई कि फिलहाल मेटा का फोकस मेटा पे और रील्स की मोनेटाइजेशन पर है। अभी NFT सेक्टर इन 2 बड़े झटकों से उभरा भी नहीं था कि सोलाना पर मौजूद NFT मार्केटप्लेस फॉर्म फंक्शन ने ये खबर अनाउंस की कि वो 29 मार्च को कंप्लीट शटडाउन कर देगा। फेब 2022 में लॉन्च हुए फॉर्म फंक्शन को $4.7 मिलियन की सीड फंडिंग मिली थी और उसके सेल्स नंबर्स भी ठीक ठाक ही थे। बावजूद इसके फॉर्म फंक्शन 1 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया।
फर्म फंक्शन ने इसके पीछे की वजह का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन सोलाना पर गिरती ट्रेडिंग वॉल्यूम को इस शटडाउन के पीछे एक बड़ी वजह माना जा रहा है। अब वजह कोई भी हो, लेकिन यूं एक एक कर एनएफटी मार्केटप्लेसेस का बंद होना एनएफटी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। 2021 में एनएफटीज ने अच्छा खासा माहौल जमा दिया था। अगर वो हाइप था तो उम्मीद करते हैं कि हाइप के वो बादल अब छट जाएंगे और आगे जितनी भी एनएफटी मार्केटप्लेसेस आएंगी वो कुछ ठोस प्लानिंग और बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ आएंगी, ताकि मार्केट के छोटे मोटे झटकों से वो टूट कर यूं बिखर ना जाए। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज मैं रुचि शर्मा लाती रहूंगी। 3.TV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड को। नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.TV में। वेब 3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। स्थिति से परिचित सूत्रों के अनुसार फर्म और एक्सचेंज बनाने के लिए क्रिप्टो लीडर्स को आकर्षित करने के बाद हांगकांग रिटेल इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य क्रिप्टो करेंसीज का ट्रेड करने की अनुमति देगा। कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में क्रिप्टो के खिलाफ दबदबे के बीच हांगकांग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपना प्रभुत्व बढ़ाया, क्योंकि सिटी का क्रिप्टो हब इनिशिएटिव ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस और फर्म्स को आकर्षित करता है। हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन 23 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिप्टो में रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन की घोषणा करने के लिए तैयार है। अथॉरिटीज रिटेल इन्वेस्टर्स को एजेंसी के नए रूल्स के अनुसार सिर्फ टॉप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करने देना चाहता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए रेगुलेशंस और लाइसेंसेस को पेश करके हांगकांग अधिक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाता है, जबकि चाइना, यूएस और अन्य देश क्रिप्टो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सिटी में वर्चुअल एसेट फर्म्स के लिए लाइसेंसिंग रेजिम शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें रिटेल एक्सेस 1 जून के लिए निर्धारित है। आइए करते हैं दूसरी खबर का रुख। 12 अप्रैल को इथेरियम ने शापेला या शंघाई अपग्रेड को लागू करने के बाद से ईथर या इथेरियम नेटवर्क में पैसिव यील्ड अर्जित करने के लिए कॉइन्स को लॉक करने में रुचि बढ़ी है। ग्लासनोड द्वारा ट्रैक किए गए डेटा से पता चलता है कि 12 अप्रैल से 4.4 मिलियन से अधिक कॉइन्स को स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट किया गया, जिससे टैली 22.58 मिलियन हो गई है। बिटफिनिक्स के एनालिस्ट ने एक वीकली रिपोर्ट में कहा, स्टेकिंग की डिमांड में वृद्धि शायद बड़े ईटीएच होल्डर्स से उत्पन्न होती है, जो अपनी होल्डिंग को लिक्विडेट नहीं करना चाहते और उसके बजाय पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, 1 महीने से अधिक के प्रतीक्षा समय के बावजूद स्टेकिंग डिमांड बढ़ा है। डेटा सोर्स के अनुसार मंगलवार तक नेटवर्क पर वैलिडेटर बनने के इच्छुक ईथर होल्डर्स को 36 दिनों तक प्रतीक्षा करनी होगी। वर्तमान में 50,000 से अधिक पर्सपेक्टिव वैलिडेटर्स कतार में है। अभी तक स्टेकिंग ईथर 4% से 5% की एनुअलाइज्ड यील्ड प्रदान करता है। ओवर टू यू शिखा। क्यूरेटेड एनएफटी मार्केटप्लेस सुपर रेयर 2 महीने की एग्जीबिशन के लिए न्यूयॉर्क में 0x.17 गैलरी का इंटीग्रेट कर रहा है, जिसने नॉन फंजिबल टोकन आर्टवर्क को इमर्सिव फिजिकल स्पेसेस में लाने के महत्व पर जोर दिया है। 0x.17 पर पॉपअप हिस्टोरिक साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट नेबरहुड में एक कम्युनिटी फोकस्ड एनएफटी गैलरी 20 से अधिक सुपर रेयर आर्टिस्ट के कार्यों का एक क्यूरेटेड प्रोग्राम पेश करेगी। गैलरी 1 जून को एआई आर्टिस्ट क्लेयर सिल्वर के लिए आर्टिफैक्ट्स टाइटल वाले सोलो शो के साथ खुलेगी। सुपर रेयर ने एक प्रेस रिलीज में कहा, एग्जीबिशन डिफरेंट फिलॉसफीज पर आधारित 7 आर्टवर्क्स और हमारे भविष्य के बारे में सवाल दिखाती है, जिसमें एआई 7 अलग अलग माध्यमों का रूप ले रहा है, जैसे वीडियो, जनरेटिव, स्टिल, पोएट्री, म्यूजिक, 3D और AI वॉइस के साथ में एक अवतार है। सिल्वर ने कॉइनडेस्क को बताया कि AI आर्ट NFT आर्ट की विकसित दुनिया में अपना स्थान बना रही है। इस स्पेस में और क्रिप्टो आर्ट के भीतर मूवमेंट्स
हो रहे हैं। सिल्वर ने समझाया, उन्होंने अपने फॉर्मेटिव आर्टिस्ट मिल गए और वे डिजिटल दुनिया में रहते हैं और हम सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में अपने जीवन में और आने वाली पीढ़ियों से अधिक समय बिताने जा रहे हैं और यह AI इसमें तेजी लाएगा। ओवर टू यू रोशनी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस ने मंगलवार को पब्लिक कमेंट के लिए क्रिप्टो और डिजिटल एसेट मार्केट्स के लिए अपनी पॉलिसी रिकमेंडेशंस खोली। 18 पॉलिसी रिकमेंडेशंस मार्केट के दुरुपयोग, हितों के टकराव, क्लाइंट एसेट प्रोटेक्शन, डिस्क्लोजर्स और क्रिप्टो से जुड़े जोखिमों जैसे मुद्दों को कवर करती है। प्रेस को दिए गया बयान में कहा गया है कि प्रपोज रिकमेंडेशंस मुख्य रूप से क्रिप्टो मार्केट्स के भीतर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन और मार्केट इंटीग्रिटी के बारे में व्यापक चिंताओं को संबोधित करती है। पिछले साल लगभग 130 देशों में ग्रुप सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स वाले इंटरनेशनल पॉलिसी फोरम ने फिनटेक और क्रिप्टो दोनों के लिए IOSCO के रेगुलेटरी एजेंडा को विकसित करने के लिए एक फिनटेक टास्क फोर्स की स्थापना की। सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी FTF की अब अध्यक्षता करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बयान के अनुसार हिडन रोड के कस्टमर्स जो प्राइम ब्रोकरेज और अन्य ट्रेडिंग सर्विसेज प्रदान करते हैं, एक नए कोलैबोरेशन के माध्यम से क्रॉसओवर मार्केट्स द्वारा चलाए जा रहे क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं। क्रॉसओवर एक एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म संचालित करता है, जिसका अर्थ है कि कस्टमर्स को ट्रेड के लिए क्रेडिट स्पॉन्सर की आवश्यकता होती है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के विपरीत कस्टमर्स अकाउंट नहीं खोल सकते हैं और पैसे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वो सेटलमेंट ऑप्शंस या एक्सचेंज ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूशन है। कोलैबोरेशन का उद्देश्य कस्टडी और ब्रोकरेज से ट्रेड एग्जीक्यूशन को अलग करके हितों के टकराव से बचना है, जिससे इंस्टीट्यूशंस को अपने खुद के क्रेडिट काउंटर पार्टीज को स्वतंत्र रूप से चुनने की क्षमता मिलती है। प्रेस रिलीज के अनुसार हिडन रोड कस्टमर्स के पास क्रॉसओवर के एग्जीक्यूशन सिर्फ कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी स्पॉट ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने तक पहुंच होगी। हिडन रोड क्रॉस एक्स के साथ जुड़ने वाली पहली फर्म है, जिसे क्रॉसओवर ने मार्च में लॉन्च किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.tv या हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर लॉग ऑन कीजिए या स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। With 3.tv, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.tv in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.tv delivers the news that matters. इलॉन मस्क के ट्वीट से खुली मिलेडी एनएफटीज की किस्मत। याचिका खारिज होने के बावजूद रेडियो ने नहीं छोड़ी उम्मीद, प्लेयर्स के साथ डिवीजन बेंच में दायर की अपील। वेब3 की दुनिया में धमाल मचाने को तैयार है आपकी चहेती बार्बी। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रुचि शर्मा। कैसा लगा इस हफ्ते की एनएफटी न्यूज का ये ट्रेलर? तो चलिए एनएफटी वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के साथ साथ एक खास गेस्ट से मुलाकात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हालचाल। एनएफटी मार्केट की परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते अच्छी रही। मीम कॉइन को लेकर ट्रेंड के बावजूद एनएफटीज की ग्लोबल ट्रेडिंग वॉल्यूम में उछाल देखा गया है। एनएफटी मार्केट पिछले 7 दिनों में $217 मिलियन की एनएफटी सेल्स के साथ 36% बढ़ी है। हर बार की तरह पिछले हफ्ते भी 15% की बढ़त के साथ सबसे ऊपर रही इथेरियम एनएफटीज, जिसने कुल $112 मिलियन की सेल्स जुटाई। तो इस हफ्ते दूसरे नंबर पर रही बिटकॉइन एनएफटीज, जिसने 260% के जबरदस्त जंप के साथ $56 मिलियन की सेल्स इकट्ठा की। पिछले हफ्ते इस लिस्ट में एक नई एंट्री हुई माइथोस की, जो एक ब्लॉकचेन और गेमिंग इकोसिस्टम है। माइथोस ने इस हफ्ते 11 मिलियन की सेल के साथ सोलाना और पॉलीगॉन दोनों को मात दे दी, जो कि $9 मिलियन और $7 मिलियन के साथ चौथे और पांचवें पायदान पर रही। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे गेस्ट साहिल बंसल का, जो एनएफटी वॉयज के सीएमओ हैं। लॉन्च के महज 3 महीनों में बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ने पॉलीगॉन और सोलाना एनएफटीज को पीछे छोड़ते हुए सेकंड पोजीशन हासिल कर ली है। क्यों बिटकॉइन ऑर्डिनल्स इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है
और क्या है बिटकॉइन एनएफटीज का फ्यूचर? क्या इथेरियम एनएफटीज को भी पीछे छोड़ देगी? Bitcoin NFTs are on the second position in NFT sales this week. Why are Bitcoin NFTs gaining so much traction, and will it surpass Ethereum network NFT sales in the future? Of course, Bitcoin NFT sales are on the second position this week. I'm sure that it has been the case since quite some time also in the larger picture if you look at it, because considering the primary reason, the gas fee is quite lower when it comes to Bitcoin NFTs, because the transaction gas fee is something that you cannot escape, that has to be a part of the entire transaction, and it's relatively lower when it comes to this as compared to the other networks. Moving on to the second notion that I have is it has a larger user base, which directly affects the entire footfall and the entire notion when it comes to the traction of the website or whatever the entire transaction is going to be. The third one is that it's clearly comparatively easier to mint. Marginally speaking, when it comes to the technological jargon of this world and anything becomes easier to mint, it changes the lifespan and the cycle of the entire thing. So meaning that people are going to be more driven towards it, especially when we're chatting about cryptocurrency and everything. Then I'd come to the fourth and my final point, which is to mention that after the entire launching of the network of ERC20 tokens, the next big thing with the ordinals NFT creator can decide the number of NFTs minted. The number of NFTs minted, which could be like decided by the creator itself, is a notion that just gives you a lot of flexibility, because it's an extremely volatile market out there and it's something that everyone is still figuring it out. They don't really understand the entire nitty-gritties of it, but the amalgamation of this entire bit of it is quite thrilling. And of course, the biggest reason is security. Security, as in, it's something that has existed for a way longer time as compared to the other network chains, and people have heard more of it. The recall theory is higher. That's just how I'd like to conclude the entire thing. But millions of Bitcoin transactions are pending few days back because of network congestion. That is also there. So I cannot conclude the fact that the Ethereum chain would get surpassed. That is something that remains untold. My inclination is that it's not going to Bitcoin is not going to surpass the Ethereum chain as of now. But let's see what the world has to offer. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बिजनेस मैग्नेट इलॉन मस्क भी गजब की हस्ती हैं। इनकी छोटी मोटी कथनी करनी भी मार्केट पर जोरदार असर करती है। डोजकॉइन के सपोर्टर रहे इलॉन मस्क ने जब पिछले दिनों ट्विटर के लोगो में डोजकॉइन की फोटो लगाई तो डोजकॉइन की जैसे किस्मत खुल गई। चंद मिनटों में डोज पहली बार 37% बढ़ गया और अब ऐसा ही कुछ हो रहा है मिलेडी एनएफटीज के साथ। इलॉन को ट्विटर से कितना प्यार है ये दुनिया जानती है। आए दिन वो कोई ना कोई ऐसा ट्वीट करते रहते हैं जो टेक मार्केट्स की दुनिया में हलचल मचा देता है। अब इलॉन ने मिलेडी के एक अवतार का एनीमे स्टाइल मीम बनाकर ट्वीट किया है। इस पर लिखा है देयर इज नो मीम, आई लव यू। बस फिर क्या था? इस ट्वीट ने ऐसी हलचल मचाई कि 1 घंटे के अंदर अंदर ना सिर्फ इसे 4 मिलियन व्यूज मिले, इस पर लाखों इंटरैक्शंस हुए, बल्कि मिलेडी एनएफटीज के प्राइस ने भी जबरदस्त छलांग लगाई। सेकेंडरी मार्केट पर इसका प्राइस 3.75 ETH से सीधा 7.3 ETH पहुंच गया, यानी 24 घंटों के लिए इसका प्राइस 57% उछला। फिलहाल ये 5.69 ETH पर है। इसका असर एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी पर भी दिखा। एक ही घंटे में 600 से ज्यादा मिलेडी एनएफटीज 3700 ETH के लिए यानी $6.9 मिलियन के लिए बिक गई। बेशक उस दौरान ओपनसी पर यह बेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट था। रैलियों को देख आजकल मुझे यही गाना याद आता है, जो स्ट्राइकर और एमपीएल के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई को छोड़ने को बिल्कुल राजी नहीं है। याद है आपको, कुछ 2 हफ्ते पहले रेडियो ने स्ट्राइकर और एमपीएल के खिलाफ केस दायर किया था, ये कहते हुए कि वो रेडियो से एसोसिएटेड स्पोर्ट्स स्टार्स की एनएफटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि इन प्लेयर्स की ये तमाम इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और ऐसी इंफॉर्मेशन कोई भी यूज कर सकता है, इस पर किसी का हक नहीं है, यहाँ तक कि खुद प्लेयर्स का भी नहीं। उसी के जवाब में अब क्रिकेटर्स मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, उर्मान मलिक, शिवम मावी ने रेडियो के साथ मिलकर अब डिवीजन बेंच के सामने अपील की है।
हाई कोर्ट ने कहा कि प्लेयर्स की इमेजेस वाली एनएफटीज उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए प्लेयर्स का उन पर पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ओएफएस अपने प्लेटफॉर्म पर टीम्स क्रिएट करने के लिए किसी प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उसकी एनएफटी बनाते हैं तो वह पीस प्रॉपर्टी बन जाता है जिस पर प्लेयर का अधिकार होता है। ऐसी इमेज एनएफटीज को कोई प्लेटफॉर्म ना तो ट्रेड कर सकता है और ना ही उस प्लेयर की सहमति के बिना उस एनएफटी से पैसा बना सकता है। अब बच्चे टॉयज खरीदने की नहीं बल्कि एनएफटीज और डिजिटल कलेक्टिबल्स खरीदने की जिद करेंगे, क्योंकि हम सबकी फेवरेट बार्बी अब वेब3 वर्ल्ड में एंट्री कर रही है। वो डॉल जिसके साथ शायद ही दुनिया में कोई बच्ची हो जो खेली ना हो, अब वो वेब3 की दुनिया में तहलका मचाने जा रही है। बार्बी के लिए क्रेज और उसकी पॉपुलैरिटी से तो हर कोई वाकिफ है ही। 1959 में लॉन्च हुई बार्बी डॉल्स अब तक ना जाने कितनी प्रोफेशनल करियर ओरिएंटेड लुक्स में लॉन्च हुई हैं। ये वो पावरफुल लुक्स हैं जिससे करोड़ों बच्चे अलग अलग करियर्स के लिए बचपन से ही इंस्पायर हुए हैं। कुछ ऐसी ही पर्सनालिटी ट्रेट्स को सिंबलाइज करती हैं बॉस ब्यूटी एनएफटीज। ऐसे में बार्बी और बॉस ब्यूटीज भला कैसे कोलैबोरेट ना करते? इस कोलैबोरेशन के तहत बार्बी के डिजिटल कलेक्टिबल्स लॉन्च किए जाएंगे और वो भी अब तक की बार्बी की बेस्ट करियर लुक्स में। इसके लिए 250 लुक्स सिलेक्ट की गई हैं, जिसमें आर्टिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स, सीईओज, डॉक्टर्स, वेट्स और पायलट की लुक भी शामिल है। ये कलेक्शन metalcreation.com पर $25 पर पैक के प्राइस पर अवेलेबल होगी। ये कलेक्शन कई रेयरिटी फीचर्स ऑफर करती है और हर पैक में 4 रैंडमली सिलेक्टेड बार्बी कलेक्टिबल्स होंगे। ये कलेक्शन 18 मई को वीकॉन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की जाएगी। एनएफटीज भला किसे पसंद नहीं है? आने वाले समय में हो सकता है आप टीवी देखते देखते टीवी पर ही अपनी फेवरेट एनएफटीज एक्सप्लोर और बाय एंड सेल कर सकेंगे। साउथ कोरियन टेक कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाल ही में अपने ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट टीवी के लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है। एलजी ने इस पेटेंट के लिए नवंबर 2021 में अर्जी दी थी। अब ये फैसला होना बाकी है कि इस इनोवेशन को मंजूरी मिलती है या नहीं। एलजी की इस ऐप से अन्य डिवाइसेस को क्रिप्टो वॉलेट और एनएफटी मार्केट सर्वर से कनेक्ट किया जा सकेगा ताकि ट्रांजैक्शंस हो सके। एनएफटी मार्केट सर्वर के साथ कनेक्ट करते ही डिवाइस ऑन स्क्रीन क्यूआर कोड्स जनरेट करेगी, जिससे यूजर्स अपने क्रिप्टो वॉलेट के जरिए अपने ट्रांजैक्शंस पूरे कर सकेंगे। एलजी ने पिछले साल सितंबर में अपना एनएफटी प्लेटफॉर्म आर्ट लैब लॉन्च किया था। जाहिर है अपनी एनएफटी मार्केट प्लेस लाने के बाद अपने स्मार्ट टीवी पर एनएफटीज की ट्रेडिंग शुरू करना इस डायरेक्शन में अगला कदम साबित होगा। लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि एलजी का टीवी सिर्फ अपने वॉलेट वोलिप्टो तक ही सीमित रहेगा या दूसरी कंपनियों के वॉलेट्स को भी सपोर्ट करेगा। दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ एनएफटी वर्स। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन एनएफटी की दुनिया से ऐसी और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0TV। ऐसी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करें। With 3.0TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0TV delivers the news that matters. Hello and welcome to 3.0TV. I am your host Ruchi Sharma. And in today's special segment, we are going to explore the spectacular rise of Bitcoin ordinals at a time when unfortunately Ethereum NFTs are crashing. According to Dune Analytics, the new and still very niche Bitcoin NFT market is on a tear, with the chart of new inscriptions and trading fees going parabolic.
So far, according to a table published by Ordinals Global, the top 30 ranking Bitcoin NFT Ordinals collections rigged up a total of more than 2,807 Bitcoin in total sales volume. This is more than $76 million at current prices. More than $5 million has been paid to miners in fees, and so far there are more than 1.6 million inscriptions. The increasing activity in the Bitcoin Ordinals NFT market looks to have come at a time when volume in the Ethereum NFT market has been dipping. Indeed, it seems to be at the point of crashing. Now let's hear from our esteemed guest and NFT artist, Mr. Ajay Purushothaman, about the ongoing tug-of-war between Bitcoin Ordinals and Ethereum NFTs. Mr. Ajay, welcome to 3.0 TV. Hello, thank you. The NFT market is still relatively new and rapidly evolving space, and there is currently lack of clear regulation guidance for market participants. Some potential areas where regulatory guidance may be needed includes tax treatment of NFT transactions, consumer protections, intellectual property rights, and there may be need for a clarification around the use of blockchain technology in NFTs, specific moments in the Bitcoin blockchain. But yeah, it remains to be seen if the current trend will continue in the long run and whether Bitcoin Ordinals will ultimately outshine Ethereum NFTs, because both asset classes have their own strengths and use cases, and the market may ultimately determine the value and demands for each. So far this year, the Ethereum NFT market has been bolstered by significant volume on the Blur exchange marketplace, which was in turn driven by token incentives against trading volume. As the May 1st deadline for the token claims draws near, more traders are abandoning Blur. Trading volume on the marketplaces has decreased by 90% from its peak on February 22nd, and as of yesterday stood at 6,509 Ether. Meanwhile, OpenSea registered around 3,000 Ether in sales. The Ethereum NFT marketplace has also been hit by a number of large companies curtailing or abandoning their NFT plans. Most notably, Meta completely shuttered its plan for Instagram integration with NFTs. Meanwhile, the hype around its up-and-coming rival is set to increase as a new category of Bitcoin NFTs has been released this month. Bitcoin stamp NFTs contrast with Ordinals as they are directly stamped on the transaction rather than being a prunable part of a transaction. Coders are even recreating classical games such as Doom and Tetris as Bitcoin stamps that will be forever stored on the blockchain. Since the start of the year, Bitcoin is up 60% and Ether by 48%. The Nasdaq index is up by 16%. Meanwhile, as the volume in the Ethereum NFT market dries up, its traders seem to be exiting the market with huge losses. Well, that's it in today's special segment. We will meet again with interesting stories. This is me, Ruchi Sharma, signing off. Keep watching 3.0 TV. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishaka Thakur. You are watching a special episode of Metaverse Magic, wherein we bring to you important updates from the Metaverse space. Immense potential of Metaverse has already taken several sectors by storm. Be it education, gaming, entertainment, wellness and commerce, they have all embraced this technology to serve better. Metaverse's use cases are generating rave reviews in the fashion world as well. After witnessing the successful second edition of Decentraland Fashion Week, you can now witness Metaverse Beauty Week on Decentraland, Roblox and Spatial. And if you are a chess fan and eager to test your board skill with none other than 5-time world champion Viswanathan Anand, you can soon realize your dream, of course, on Metaverse. Let me tell you, the potentials of Metaverse are massive. According to Global Metaverse Market Intelligence Report 2023, Metaverse market is expected to grow by 44.8% to reach $205.3 billion in 2023.
With all these activities taking place, the metaverse space is gaining traction day by day. So let's listen into what Mr. Saurabh Gupta, co-founder of Tamasha Live, has to say about the potentials of metaverse. So I think currently metaverse market is in a phase where the projects with strong fundamentals will stay in the market, and projects with no fundamentals and which were a part of this boom, crypto boom, will go away. Right? So, and currently one more thing is interesting. So most of the markets, how they behave is based on what the trend is, right? When Meta announced that Meta was the next big thing, and he was putting billions of dollars there. Everyone was going into it, right? But there were only limited projects who were building something, were solving a fundamental problem, who were creating infra, right, for the metaverse. But most of the projects were just in the air, right? And right now, currently, the trend is around AI. So most of the top companies are racing, in terms of showing their AI power. And that's why most of the investment is going there. And now let's take a look at the important events that made headlines. The majestic game of chess has entered the magical world of metaverse. Yes, if you are a chess fan, you can now play games with virtual avatars of chess players, including 5-time world champion Viswanathan Anand. International Chess Federation and Tech Mahindra are set to launch the Global Chess League in Dubai from June 21. Fans will be able to simultaneously play games in the virtual world of metaverse. GCL organizers are promising fantasy gaming offers that will allow fans to forecast the next move of players during games in order to make the sport more accessible to both hardcore and casual fans. All games will also be live streamed in India on OTT platform. Not just playing games in the virtual world, but you can create history with the help of metaverse. Nutrilite recently made history by hosting Nutraverse, a cooking show in metaverse featuring digital avatar of chef Sanjeev Kapoor, India's renowned celebrity chef. Thousands of attendees witnessed the chef's digital avatar making 3 nutritious and delicious dinners using Nutrilite products. It offered participants an immersive virtual reality experience in which they could create avatars, connect with other participants, engage in entertaining activities and games, and take selfies with the famous chef's digital avatar. The World Records Union recognized this event as the world's first ever metaverse cookery show. The live event was also the grand finale of a recipe contest campaign that invited home cooks from around the world to compete. At the grand finale event, the digital avatar of chef Sanjeev Kapoor announced the winners of the contest. Well, if you keep wondering about what your avatar is going to wear in metaverse, then you don't need to worry at all, as brands are already embracing metaverse. Following the January release of H&M Looptopia experience on Roblox, H&M has released a new limited time experience in the metaverse to highlight their exclusive Stranger Things summer collection for kids. For children aged 8 to 14, the 24-piece collection comprises graphic t-shirts, style jerseys, and surfer-inspired outfits. The Surfer Boy pizza delivery game inside H&M. Looptopia, which is set to premiere on May 25, is inspired by the Surfer Boy Pizza eatery in Season 4 of Stranger Things. Users will be able to play a fast-paced pizza delivery game in Loop City's main area with bespoke Stranger Things clothes as incentives. Users will unlock a special trailer of what will come later this autumn within H&M Looptopia after completing all of the deliveries within the session. There's a lot happening in the metaverse space. After witnessing the 2 successful editions of Decentraland Fashion Week, get ready to witness a metaverse beauty week. Neutrogena, Ulta Beauty, Lush and Lottie London have become the first brands to participate in Metaverse Beauty Week. Yes, from June 12 to 16, Decentraland, Roblox and Spatial will host Metaverse Beauty Week. The tagline for the show is "Reality Gets a Makeover." The participating brands and shops hope to engage their existing customers by bringing them into a digital area as well as interact with social gaming players who are already active in Web3 environments. The brands will reinvent their products as AR filters, smart wearables, and gamified tools for their activations. Some of the brands such as Neutrogena will make their first foray into the virtual world.
Metaverse became a buzzword ever since Facebook rebranded to Meta. And after 15 months and a nearly 30% loss, an ETF with the declared objective of betting against Meta's perspective of Metaverse is closing down. As the firm shifts its focus to artificial intelligence, Subversive Capital Advisor will close and liquidate the Subversive Metaverse ETF ticker PUNK. On May 31st, it will close its PUNK ETF to focus more on artificial intelligence. PUNK was founded in January 2022 to invest in firms that provide services and products that support the metaverse's infrastructure and applications. Despite its name, Mark Zuckerberg's firm was not one of those companies. According to Subversive Capital, the ETF will focus on emerging technical and human advancement, which necessitates responsible enterprises committed to democratic, sustainable, and factual ideas. Well, that's all in this episode of Metaverse Magic. Do like, share, and subscribe to our channel. And for more such interesting updates on Metaverse, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishaka Thakur, signing off. Bitcoin trades below $28,000, Ether stays above $1,800. Hong Kong allows retail investors trade Bitcoin, ETH, other crypto. Number of Ether staked has surged by 4.4 million since Shopella upgrade. International Securities Regulator IOSCO proposes policy recommendations for crypto. Crossover markets teams with credit network Hidden Road to enable crypto trading. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishaka Thakur. Leading virtual digital assets or VDAs have snapped nearly 2 weeks losing streak as the US lawmakers are still divided over raising the debt ceiling issue. Bitcoin reclaimed the crucial $27,000 mark. Manoj Dhara joins us to tell us how the global cryptocurrency market is performing today. IC15 index of cryptocurrencies was up 1% at 37,760 points. The macroeconomic uncertainties, including the concerns that the US President Joe Biden and House leadership would be unable to reach an agreement about raising the country's debt limit, is actually a big market worry. That's what the market participants have said. Meanwhile, experts have suggested that the retreat of the market makers, Jane Street, and the jump trading from the crypto trading in the US had spooked investors, decreasing an already dwindling supply of the market liquidity. They have also noted an increase in the call options on the crypto exchange Bybit, a signal of unrest about the debt ceiling and the other macroeconomic uncertainties. Going forward, the minutes of the May 2nd and 3rd FOMC meetings will be released this week, revealing how the committee arrived at a peak of 5.25%, and further PCE data will be released to highlight the continuation of the US inflation. Talking about the trending tokens of the day, Conflux token managed to become the biggest gainer of the lot with 24-hour registering a 17% jump in the last 24 hours. In an interesting piece of news, the blockchain revolution has not only transformed industries such as finance and supply chain management, but it is now making its mark on the entertainment industry as well. The music metaverse token is revolutionizing the way fans access their favorite concerts, providing tickets at up to 90% of the face value. Meanwhile, talking about the DeFi sector, Aave version 2 investors were temporarily unable to get access to their funds on the decentralized exchange deployment on the Polygon blockchain after a strangely containing problematic flaw that went live last week.
And if you talk about the stock futures, slipped after a key debt ceiling meeting between the President Joe Biden and the House Speaker's Kevin McCarthy. Futures tied to the Dow Jones Industrial Average fell 62 points or 0.2%. S&P 500 futures slipped by 0.1%. Nasdaq 100 futures were down marginally. If you talk about Bitcoin, was trading at $27,290, up 1.8%. According to the data from the CoinShares Digital Assets Investments product, saw a Bitcoin outflow totaling $32 million for the last week. This represented the fifth consecutive week of outflows which the sector has seen overall. If we talk about Ethereum, the second largest crypto was up by 2.2%, trading at $1,856. Since the successful completion of the Shanghai upgrade, the number of staked Ethereum tokens within the Ethereum blockchain has increased significantly. That's what the data have suggested. And according to a separate data from the Glassnode, Ethereum traders deposited over 4.4 million tokens for staking since 12th April, totaling 22.58 million. On my left, if you talk about the other altcoins, Binance BNB was trading higher by 1.5%. Cardano's ADA token was up by 0.5%. Next on the list was Avalanche FX, trading 1% higher. Even as the cryptocurrency markets witnessed huge outflows, Avalanche network saw a major inflow last week, defying sentiment across the broader crypto markets have actually noted. Elsewhere, if we talk about Litecoin, has also witnessed a positive inflows amounting $3 lakh and above. Next on the list was Polygon Matic, was trading up by 1.5%, was trading at $0.88. Shiba Inu was up by 2%. Next on the list was Polkadot, was trading higher by 1.1%. If talk about Solana Sol, was trading lower by 0.1% at $19.8. Doge, the popular meme coin as we say, was trading down by 0.7%. Next on the list was Ripple's XRP token, traded at $0.46, down by 0.3%. Thank you, Manoj, for your in-depth analysis of the global cryptocurrency market. And now back to the headlines. After enticing crypto leaders to establish firms and exchanges, Hong Kong to allow retail investors trade Bitcoin, Ethereum and other cryptocurrencies, according to sources familiar with the matter. Amid the clampdown against crypto in several leading economies, Hong Kong leveraging this opportunity to increase its dominance as the city's crypto hub initiative attracts global crypto exchanges and firms. Hong Kong Securities and Futures Commission is set to announce retail investors' participation in crypto at a press conference on May 23. The authorities are looking to let retail investors trade only top cryptocurrencies as per new rules of the agency. Hong Kong takes a more progressive approach by introducing regulations and licenses for the crypto industry, while China, the US, and other countries restrict crypto. The city plans to introduce a licensing regime for virtual asset firms in May, with retail access slated for June 1. Interest in staking Ether or locking coins in the Ethereum network to earn passive yield has surged since Ethereum implemented the Shapela or Shanghai upgrade on April 12. Data tracked by Glassnode show more than 4.4 million coins have been deposited into the staking contract since April 12, taking the tally to 22. Last year, the International Policy